Hello guys, how are you doing? So this is CS Aarush Bajpai and welcome to first lecture of business laws and management. As I have introduced myself earlier in the video of that I am associated with Anoop Institute for teaching you a very fantastic and interesting subject which is known as business laws and management. So business law is and management is a subject which is being introduced in your syllabus of CSEET uh, because in CS you need to have a good and core command over the laws. Then you are expected to also have a good command over your management skills. That is why the purpose of introducing this subject in very first stage of CS is to make you understand that being as a company secretary you are expected कि आपको लॉ के अच्छी कमांड होनी चाहिए और आपके मैनेजमेंट स्किल्स भी अच्छे होने चाहिए. सो व्हेन वी टॉक अबाउट लॉ लॉ आपके इस सब्जेक्ट में आपके 16 मार्क्स को कवर करता है. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट मैनेजमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल्स ओवर 40 मार्क्स. सो बिजनेस लॉ में आप जब देखोगे तो बिजनेस लॉ में पार्ट ए में आपके 6 चैप्टर्स हैं. इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ, एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ, एलिमेंट्स ऑफ लॉ. Then third is elements of law of contract. Fourth is elements of law relating to partnership and limited liability partnership. Fifth is element of law relating to sales of good act. Sixth is elements of law relating to negotiable instrument act. Then here comes the part B, which is known as business management. Business management, first chapter is introduction of management, then second chapter is functions of management, third chapter is principles of management and modern approaches, then last is management knowledge for company secretaries. This whole syllabus consists of 10 chapters, 10 interesting chapters divided into two parts. Part A, business law, which carries 60 marks. Part B, business management, which carries 40 marks. And I have already told you, or आपने जब when you have entered CSEET, so you have must seen the syllabus that this is an OMR based subject. Means you don't have to write it like accounts or economics. You have to just tick marks. Okay, so moving forward, आपका ये फर्स्ट लेक्चर है. So इस फर्स्ट लेक्चर में I will try to make you understand that what is the basic definition and meaning of the law. First, how the law is derived from various sources. Then third, what are the different definitions given by scholars. Fourth, meaning and different definitions and given by different scholars in different types of thinkings of the laws. So before moving forward, first let's start with the chapter number 1, that is known as introduction to law. So introduction to law means, sorry guys, there is no clear definition. When I say that there is no clear definition by law, there is no such clear definition given by the law. Meaning, so meaning that meaning that law is not defined anywhere definition are given by various jurists.
slash scholars. So, guys, when I say that law is not defined, means law is not defined in anywhere else. लॉ की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, बट यस, लॉ क्या है, मैं आपको जनरल मीनिंग लेमैन टर्म्स में समझाऊं तो, like, you have just crossed, all of you have just crossed school, very very much congratulations, or some of you have given, you are must be giving 12th, so all the best for your examinations and results also. But मूविंग फॉरवर्ड, आप स्कूल में थे, एंड सिंस आई वाज आल्सो इन स्कूल, सो स्कूल्स में कुछ एक कोड ऑफ कंडक्ट्स बनाए जाते थे, सेट ऑफ रूल्स बनाए जाते थे, जो कि स्कूल में हर स्टूडेंट को फॉलो करने होते थे, अलॉन्ग विद एंड टीचर्स अलॉन्ग विद द एसोसिएटेड स्टाफ, दे आर एक्सपेक्टेड, प्रिंसिपल उनसे एक्सपेक्ट करता था, या स्कूल का फाउंडर एक्सपेक्ट करता था कि वो जो भी रूल्स बने हुए हैं वो फॉलो करें, बिकॉज विदाउट विदाउट नॉट फॉलोइंग दोज रूल्स, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते थे। फर्स्ट लेट्स अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस। फर्स्ट, कि स्कूल में स्टूडेंट इनडिसिप्लिन्ड होंगे, कुछ भी कभी भी, मींस रनिंग क्लास में खा रहे हैं, दैट इज नॉट अलाउड इट। स्कूल्स में फाइट्स हो सकती थी, दैट इज नॉट ऑल्सो अलाउड इट। स्कूल्स में स्टडी के अलावा बाकी सब कुछ चल रहा है, दैट इज नॉट ऑल्सो अलाउड इट। दैट इज वाई लॉ फ्रेम किया गया। फॉर द टीचर्स, स्कूल स्टार्ट्स एट 8 AM बट दे आर कमिंग इन टू 9 AM। 8 AM से 9 AM की क्लास जो थी वो स्किप कर दी, दे आर कमिंग टू 9 AM, पंचिंग आउट, एंड देन ऑल्सो दे आर गिविंग गोइंग इन टू 1 PM, तो दैट इज नॉट ऑल्सो अलाउड इट। Then staffs, they are delaying the process, means parent is standing in front of the window to submit the fees of the student, but the staffs are busy talking to their relatives and other things. So this is how the system does not run. ओके, सो दैट इज वाई स्कूल में कोड ऑफ कंडक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, सॉर्ट ऑफ रूल्स इंट्रोड्यूस किए गए कि पर्टिकुलर एक पर्सन जो एसोसिएटेड है स्कूल से, दे आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो दिस कोर्स ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग देयर टाइम व्हेन दे आर इन देयर स्कूल। आफ्टर दैट स्कूल इट्स देयर पर्सनल चॉइस, वट एवर दे वांट टू डू। दैट इज हाउ एक कंट्री में या एक स्टेट में जब कोई इंडिविजुअल बॉर्न होता है, एक इंडिविजुअल रेसिडेंट होता है, सिटीजन होता है, दे आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो सर्टेन रूल्स, एंड दोज आर रूल नथिंग एल्स, जस्ट लॉस। आप लॉ होते हो तब जब एक इंडिया में होते हो, जस्ट लेट्स टेक सपोर्ट कि आई एम इन लखनऊ। लखनऊ में व्हेन यू सी, तो लखनऊ में ट्रैफिक लॉज होते हैं, लखनऊ में देयर आर म्युनिसिपल लॉज। म्युनिसिपल लॉज कहते हैं कि यू शुड नॉट थ्रो द गार्बेज ऑन द रोड, और यू शुड नॉट स्मोक द सिगरेट्स इन द पब्लिक एरिया। बट व्हाट आई डिड, आई थ्रो द गार्बेज ऑन द स्ट्रीट एंड आई स्मोक इन द पब्लिक एरिया। ओके, सो अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? इसके कॉन्सिक्वेंसेस दो होंगे कि अगर वो गार्बेज वहीं पे पड़ा रहा 4-5 दिन के लिए, तो वो गार्बेज रॉटन होगा, और उसकी वजह से जो उसकी पुंजेंट स्मेल होती है वो फैलेगी पूरा एरिया में, जिसकी वजह से वहाँ के जो रेसिडेंट्स होंगे उनको स्मेल आएगी, एंड सम ऑफ देम मे गेट इन्फेक्टेड ऑल्सो। फर्स्ट, देन थर्ड, इफ आई स्मोक इन द पब्लिक एरिया, तो जो भी, अगर मान लीजिए किसी को रेस्पिरेटरी क्रॉनिक डिजीज है, उस मेरे स्मोक की वजह से उस बंदे को लंग्स में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको फिर अस्थमा की बीमारी है, एंड अस्थमा की बीमारी में क्या होता है कि आप डीप ब्रीथ फिर कर नहीं पाते, यू आर हैविंग प्रॉब्लम्स इन ब्रीदिंग, तो देन you will that person will suffer due to my actions. Okay, so these are the laws being framed for the benefit of the people as a whole. So जब आप एक इंडिविजुअल एक सेट ऑफ एक सोसाइटी में रहता है, देन ही इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो सर्टेन बेसिक मैनर्स एंड बेसिक रूल्स that are just nothing but laws. So law, if I say that law, what is law?
Okay, I think this is makes sense clear that what I am expecting you all to better know. So if we go to the module, so here is a definition given by some scholar named as Jack Welch. It defines, ये लॉ को ये बताता है कि लॉ इज अ कमांड ऑफ द sovereign. Law is an instrument to regulate human behavior, be it be social life or business life. So लॉ को इन्होंने क्या डिफाइन किया है कि दैट लॉ इज कमांड ऑफ sovereign to regulate human behavior, be it be social or business life. सो गाइस राइटिंग का थोड़ा सा एक मैं बता दूं, राइटिंग का थोड़ा सा ना पंगा नहीं है, बट या आपको पता है मेरी स्कूल टाइम में राइटिंग बहुत अच्छी थी, बट आई डोंट नो व्हेन आई हैव एंटर्ड कॉर्पोरेट, मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करी और योर राइटिंग गेट्स समहाउ नॉट, कहते नहीं, आप किसी प्रैक्टिस में नहीं हो तो वो चीज़ें छूट जाती हैं। तो मैं इतना ज़्यादा लिखता नहीं हूँ, बट या आई राइट अ लॉट ऑल्सो, मीन्स आई एम ऑल्सो स्टडिंग फर्दर। सो मैं लिखता हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू कंपेयर विद द गुड राइटिंग, मीन्स लाइक गर्ल्स राइटिंग, मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी ठीक है, बट नॉट, कंपैरिजन करूँ तो इतनी अच्छी नहीं है। सो फॉर दिस आई नीड यू सपोर्ट एंड फॉर द बेट सोशल लाइफ और बिजनेस लाइफ। ओके, सो ये किसने बोला कि लॉ इज अ कमांड ऑफ द सोवरेन टू रेगुलेट ह्यूमन बिहेवियर, बी इट बी सोशल लाइफ और बी इट बी बिजनेस लाइफ। सो व्हेन आई से कि यहाँ पे लॉ क्या है, लॉ को इन्होंने एक डिफाइन कर दिया है एज अ कमांड ऑफ सोवरेन, किसके लिए, टू रेगुलेट ह्यूमन बिहेवियर, टू बी इट बी हिज लाइफ, बिजनेस सोशल लाइफ और बिजनेस लाइफ। तो व्हेन आई से कि यहाँ पे आपका सोशल कमांड, सॉवरेन कमांड का मतलब क्या होता है, कमांड इज अ ऑर्डर जो कि इट्स गिवन बाय द पर्सन। कमांड का मतलब बेसिक मीनिंग होता है, कमांड का मतलब ऑर्डर, सॉवरेन का मतलब होता है इज अ स्टेट, सॉवरेन इन मीनिंग व्हेन आई गो, सॉवरेन का मतलब होता है गवर्नमेंट और हेड ऑफ स्टेट। ओके, sovereign का मतलब होता है गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट। एंड लॉ, व्हाट डज इट मीन, कमांड मीन्स ऑर्डर। व्हाट इट मीन्स, कमांड मीन्स ऑर्डर, और sovereign का मतलब क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट। सो जैक वेल्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जब गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट या हेड ऑफ द स्टेट लॉज बनाती है टू रेगुलेट द ह्यूमन, टू रेगुलेट द पीपल्स ऑफ विच ही इज अ किंग और ऑफ विच ही इज अ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर, तब ताकि उनके एक्शंस कॉन्सिक्वेंसेस को वो रेगुलेट कर सके और सोसाइटी एट लार्ज के बेनिफिट के लिए, तो उसे हम लॉ कहते हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, लॉ, अब आई विल टेल यू कि लॉ की कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है। व्हेन यू सी इंट्रोडक्शन में दैट द नेचर एंड मीनिंग ऑफ द लॉ हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय वेरियस jurists,
However, there is no immunity of opinion regarding true nature and meaning of the law. The reason of lack of immunity is that the subject has been viewed and dealt by with by different jurists at different times and from different point of view. That is to say, from the point of view of nature, source, function, and purpose of law, to meet the needs of some given period of legal development. सो व्हेन आई से कि लॉ की कोई क्लियर डेफिनेशन है, नहीं है। लॉ का कुछ क्लियर मीनिंग है, नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉ अकॉर्डिंग टू टाइम्स, फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंशियंट टाइम में लॉ की डेफिनेशन अलग थी, मिडिवल टाइम में लॉ की डेफिनेशन अलग थी, मॉडर्न टाइम्स में लॉ की डेफिनेशन अलग है। मीन्स फ्रॉम टाइम टू टाइम लॉ की डेफिनेशन फ्रॉम द सोर्स, फ्रॉम द वेरियस पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नेचर, सोर्स, फंक्शन, पर्पस चेंज है। इकोनॉमिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग भी लॉ की डेफिनेशन चेंज होती है। व्हेन आई से, फॉर मी, लाइक आई लिव इन उत्तर प्रदेश, सो उत्तर प्रदेश में लॉ की डेफिनेशन अलग है, बिकॉज देर आर द टाइम्स व्हेन देर वाज bad condition about the Uttar Pradesh, bad image of the peoples of the Uttar Pradesh. सो वहाँ उस समय डेफिनेशन ऑफ द लॉ की अलग थी, क्योंकि सर्कमस्टांसेस वहाँ की जो समय थी उसमें गवर्नमेंट ने उसके अकॉर्डिंग लॉस फ्रेम किए। अब की कंडीशन के अकॉर्डिंग लॉज अलग है। लाइक मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यूएसए का। यूएसए में इस समय इफ यू रीड दैट यूएसए इज इंकरिंग ट्रिलियन डेट, एंड उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, दैट्स नॉट गुड। Although they are into supernatural powers, they are holding first position as a supernatural power, and they are, when it comes to counting GDP, they are the nation. But the reason behind is that कि क्योंकि उनके अलग, वो अलग, they got their independence very much earlier, and then India got its independence like 76 or 77 years ago only. So there is no comparison between India and USA. बट उसके उनके उस टाइम पे अकॉर्डिंग के लॉज जो होंगे वो डेवलपिंग नेशन के अकॉर्डिंग लॉज उन्होंने बनाए होंगे। और इंडिया में जो लॉज अभी प्रिवेल कर रहे हैं, जो कि लोग बहुत बोलते हैं स्ट्रिंजेंट है, स्ट्रिंजेंट है, स्ट्रिंजेंट है, the purpose of being a stringent law is only just to regulate the behavior when you are a developing country, because in a developing country you will see that people will try to mold the law according to their own use. So that is why India में इतने stringent laws हैं, and this is the best example कि US में इकोनॉमिक लॉस, बिजनेस लॉस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस माने जाते हैं, वेयर एज इन इंडिया दे आर नॉट डूइंग, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ईज ऑफ डूइंग इन बिजनेस। यू हैव टू सी कि इंडिया में जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो डेवलपिंग है, एंड इन यूएसए इट्स डेवलप्ड। दैट इज व्हाई डेफिनेशन ऑफ लॉ चेंज्ड है अकॉर्डिंगली। सो उसके अकॉर्डिंगली कुछ स्कूल्स ऑफ सेट ऑफ स्कूल्स ऑफ लॉज डिफाइन किए गए हैं। So when I say schools of law means, when I say कि schools of law का मतलब क्या होता है, schools of law is nothing but जो डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स ने अकॉर्डिंग टू देयर टाइम्स उन्होंने जो डेफिनेशन और मीनिंग और इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ को बताया है, इट्स द मीनिंग ऑफ द लॉ, एंड दैट इज कॉल्ड एज स्कूल्स ऑफ द लॉ। राइट, मेरे अकॉर्डिंग स्कूल्स, मेरे अकॉर्डिंग डेफिनेशन ऑफ लॉ अलग है, तो मैं कौन से स्कूल में फिट होता हूँ आई डोंट नो। बट आपके अकॉर्डिंग लॉ की क्या डेफिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग आप चेंज करते रहते हो। तो व्हेन आई से स्कूल ऑफ लॉ, मीनिंग, मीनिंग स्लैश डेफिनेशन given by different
jurist slash scholars. सो स्कूल की डेफिनेशन मतलब क्या होता है? स्कूल्स ऑफ लॉस मतलब होते हैं कि मीनिंग और डेफिनेशन गिवन बाय डिफरेंट स्कॉलर्स एट डिफरेंट, सॉरी, डिफरेंट टाइम। सो स्कूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि मीनिंग एंड डेफिनेशन गिवन बाय डिफरेंट जूरिस्ट और स्कॉलर्स एट डिफरेंट टाइम्स। ओके, when we conclude that definition is given, what is meaning by definition? So there are five schools of law. First is school, natural school of law, then you have positive school of law, then you have historical school of law, then you have sociological school of law, then you have realistic school of law. There are five schools of law. So moving forward, MCQ question आपको फेंका जा सकता है and it can be asked, which of the following is considered as the schools of law? First option natural, second historical, third political, fourth option A and option B. What two you will choose? It's option D. Politic, natural and historical, because political school कुछ नहीं होता according to book. So फाइव ब्रॉड कैटेगरीज में अगर मैं देखूं तो फाइव ब्रॉड कैटेगरीज में हम क्लासिफाई कर सकते हैं: नेचुरल, पॉजिटिव, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल एंड रियलिस्टिक। सो हम वन बाय वन करके इनका मीनिंग एंड डेफिनेशन समझेंगे। सो मीनिंग फॉरवर्ड, गाइस जस्ट गिव मी वन सेकंड। मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप इफ यू सी व्हाट इज नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ, तो नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ को डिफाइन किया गया है अंडर दिस लॉ, अंडर दिस स्कूल most of the ancient definitions given by Roman and other ancient jurists fall. Euclid defined law as the art or science of what is equitable and good, whereas Cicero said the law is the highest reason implanted in nature. Justine Digest defined law as the standard of what is just and unjust. In all the definitions propounded by Romans, justice is the main and guiding element of the law. So आप नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ को अगर समझना चाहोगे तो नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ, अब मैं आपको अगर आपको स्टार्टिंग से बताऊं तो नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ क्या कहता है? नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ डिफाइंस what is the meaning, what is the true essence, and for what purpose the law is being working on. ओके, लॉ क्यों बनाया गया, लॉ मीन क्यों बनाया गया, और लॉ का मीन रीजन क्या था? सो व्हेन यू टॉक अबाउट नेचुरल स्कूल, नेचुरल स्कूल में जो कि डेफिनेशंस given by different ancient jurists or slash
When I say कि what is meaning by natural school, so natural school of law में वो definitions और वो meanings आएंगी जो कि different ancient jurists ने दिए हैं and slash by Romans ने दिए हैं. तो whenever you see that Euclid ने define किया है कि law is known as the art or definition of what is equitable and good. What is equitable and good? Meaning कि लॉ को आप आर्ट भी मान सकते हो, साइंस भी मान सकते हो. साइंस का मतलब होता है कि लॉ जब प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंटेड होता है तो बहुत सारे रीजंस और बहुत सारे इंटेंशंस के साथ इम्प्लीमेंट होता है. जब लॉ मेकर लॉ बनाता है तो ही थिंक्स इन अ ब्रॉडर एस्पेक्ट कि अगर वो लॉ इम्प्लीमेंट करने जा रहा है कोई, ही इज राइटिंग सम लॉ, सो ही इज थिंकिंग कि अगर ये लॉ इन्फोर्स होगा कल की डेट में तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, किस क्लास ऑफ पर्सन पे क्या इफेक्ट आएगा, क्या इफेक्ट नहीं आएगा, क्या इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, क्या सोशल इम्पैक्ट होगा, वो सारी चीजें कंसिडर करके ही लॉ इम्प्लीमेंट होता है. सो दैट इज वेयर साइंस एंड आर्ट, व्हाई इट इज आर्ट? आर्ट, हाउ यू इम्प्लीमेंट द लॉ. ओके, आप लॉ कौन सी स्टेज पे इन्फोर्स करते हैं, कौन सा लॉ कौन से स्टेज पे इन्फोर्स होता है. लाइक इंडिया में डेवलपिंग, बीइंग एज अ डेवलपिंग नेशन, आप ऐसा लॉ इन्फोर्स नहीं कर सकते कि आप गैम्बलिंग अलाउ कर दो, स्पेकुलेशन ऑफ मनी अलाउ कर दो डेवलप नेशंस की तरह. इट्स नॉट अलाउड इट बिकॉज इन इंडिया पीपल आर वेरी कनिंग अकॉर्डिंग टू सम foreign journalists and philosophers. So, people of India tend to be more clever in the mindset of making money. So, they have a habit कि आप they can misuse of the law. Again, it is said by some jurists. It's not my opinion. So, according to India, according to the Upline, the art or science of what is equitable and just a good is known as law. Reason forward, when you see the definition given by Romans, justice is the main and guiding element of law. Justice. So what says justice meaning? अब कोई अगर बता सके कमेंट पे तो प्लीज बताना. So justice का मतलब होता है न्याय. इन हिंदी वी कॉल्ड एज न्याय. न्याय का मतलब होता है कि अगर सामने वाले के साथ गलत हुआ है तो सामने वाले को न्याय मिलना चाहिए. मीन्स ही शुड बी जस्टिफाइड, ही शुड बी रिलीव्ड by court, either by court or by government. So that is known as justice. So justice is the main and guiding element of law. So कल की डेट में क्वेश्चन आ सकता है कि definition according to definition given by Romans, what is the main and guiding element of law? Option A, justice. Option B, natural. Option C, human behavior. Option D, sovereign. So what you will select? It's option justice. सो जस्टिस इज द मेन गाइडिंग एलिमेंट, जो कि माना भी गया है कि ऑब्वियसली बात है कि क्योंकि अगर किसी लॉ में जस्टिस नहीं प्रिवेल करता है, उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अगर जस्टिस नहीं मिलता है, सो देन देयर इज नो यूसेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अ लॉ. सो दैट इज वाई जस्टिस को बनाया गया है. सो आप जब ये पढ़ोगे कि टू डेफिनेशंस मानी गई हैं, तो लॉ को अंडरस्टैंड करने के लिए वन शुड नो इट्स पर्पस, एंड सेकेंडली it should know in order to ascertain true meaning, true nature of the law, one should go to the courts, not to the legislature. Why I am saying this? Because आप जब लॉ को समझने जाओगे तो लॉ को समझने के लिए कोर्ट के पास जाना पड़ता है. बिकॉज लॉ को समझाने की जो पावर्स कोर्ट्स के पास है, ट्रस्ट मी, लॉ को इंटरप्रिटेट करना कोर्ट्स के अलावा कहीं भी हो, इवन द लॉ मेकर्स डू नॉट हैव दैट स्किल्स कि वो लॉ बना देते हैं, बट ट्रू एसेंस, ट्रू मीनिंग निकालना, दैट्स द courts, judges, honorable judges sitting in the honorable courts, they have that skill set कि वो ट्रू मीनिंग्स निकालते हैं और उन ट्रू मीनिंग्स को डिफाइन करके, ड्राइव करके, फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी दे प्रोनाउंस देयर जजमेंट्स. सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड गाइज, आपके मतलब होता होगा कि व्हाट इज ज्यूरिस्ट. सो एनी पर्सन हु स्टडीज लॉ is known as jurist. I'm again repeating, a person who studies law
इज नोन एज जूरिस्ट. सो लेकिन ये आपको डेफिनेशन में नहीं दिखा होगा. सो बिकॉज सिंस आप 12th से निकले हो, मोस्ट ऑफ द टर्म्स ऑफ टर्मिनोलॉजी आप नहीं जानते हो वो हो गए. तो मैं अगेन आई एम रिपीटिंग फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. आई विल ट्राई कि मैं आपको डिफरेंट जो कॉमन टर्म्स हो सकते हैं जो आपको नहीं समझ में आते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन भी करता चलूँ, रादर देन जस्ट कि जो बुक्स में लिखा है वो मैं पढ़ा के चला जाऊँ. सो डेफिनेशन ऑफ जूरिस्ट ये कहता है. सो देन मूविंग फॉरवर्ड we have positive definition of law. So according to Austin, law is the aggregate of rules set by man as politically superior or sovereign to men as political subject. In other terms, law is the command of sovereign. It obligates certain code of conduct or imposes a duty and is backed by sanction. Thus, the command, duty, sanction are the three elements of law. So, when we see that definition in positive schools of law, positive schools of law में आपको दो मेन कैरेक्टर्स दिखेंगे. दो मेन कैरेक्टर्स व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द दो मेन कैरेक्टर्स, इसमें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द बुक ऑस्टिन एंड केल्सन. So Austin, Mr. Austin, Honorable Austin and Honorable Carlson have given the definition कि what is meaning of law according to the positive school of law. So according to the positive school of law, law is a set of rules given by political superior person to political inferior person. मतलब let's suppose there is a kingdom and in kingdom there is a king, and for king to dominate his presence, उसने ऐसा लॉ पास किया कि अकॉर्डिंग टू विदाउट एनी permission of any king, any person cannot go outside the state or his kingdom. So that is definition according to the definition by Austin. लॉ, व्हाट इज लॉ? क्योंकि अब परमिशन दे दी है, परमिशन के विदाउट स्टेट अब बाहर नहीं जा सकते विदाउट द परमिशन ऑफ किंग. सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉ गिवन बाय ऑस्टिन की पॉलिटिकली सुपीरियर पर्सन ने अपने कमांड देते हुए, ऑर्डर देते हुए कि अगर उस स्टेट से कोई भी पर्सन आउट ऑफ द स्टेट जाना चाहता है तो दैट विल रिक्वायर द परमिशन ऑफ द किंग. विदाउट द परमिशन ऑफ द किंग ही कैन नॉट गो. सो यहाँ पे दैट इज, आप जब पढ़ोगे तो पॉजिटिव स्कूल ऑफ लॉ मीन्स लॉ इज command by politically superior person for politically inferior person. सो पॉजिटिव स्कूल अकॉर्डिंग टू द पॉजिटिव स्कूल ऑफ डेफिनेशन ऑफ लॉ, मैंने आपको किंगडम वाला एग्जांपल दिया. किंगडम वाला एग्जांपल इज द बेस्ट सूटेड एग्जांपल कि अगर परमिशन किंगडम से किसी पर्सन को बाहर जाना है
तो इट विल रिक्वायर द परमिशन ऑफ द किंग। तो विदाउट परमिशन ऑफ द किंग अगर हम जा सकते हैं तो जा सकते हैं? नहीं, आप नहीं जा सकते। बिकॉज़ अगर आप जाने की कोशिश करोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि आपकी सिटीजनशिप विथड्रॉ करी जा सकती है एंड यू कैन बी डिक्लेयर्ड एज नॉन सिटीजन ऑफ दैट स्टेट, नॉन किंगडम ऑफ दैट किंगडम। और फिर आपको उस किंगडम से निकाला भी जा सकता है एंड यू कैन बी डिक्लेयर्ड एज disturbing element, or you can be declared as non-resident, or any person that who is disturbing an element who is disturbing or causing damage to the society। और आपको punishment means harsh punishment मिल सकती है। सो उसके अकॉर्डिंगली आपकी डेफिनेशन ऑफ लॉ चेंज हो जाती है। सो ये डेफिनेशन किसने दी थी? ऑस्टिन ने। अब when I go definition given by Kelsen gave a pure theory of law. According to him, law is normative science, means the legal norms are out norms as distinct from is norms of physical and natural sciences। आउट नॉर्म्स एंड इज नॉर्म्स का मतलब क्या है सर? सो आउट नॉर्म्स का मतलब और इज नॉर्म्स का मतलब होता है कि नॉर्मेटिव साइंस मीन्स व्हाट इज नॉर्मेटिव साइंस? नॉर्मेटिव साइंस इज नथिंग एल्स कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए थी, बट इट इज नॉट दैट। तो लॉ is just कि according to the definition given by Kelsen, law is the normative science because law ऐसा हो, ये कंडीशन ऐसी होनी चाहिए थी बट ये कंडीशन ऐसी नहीं है। तो it's a hypothetical situation given by norm Kelsen कि केल्सन ने इसको नॉर्मेटिव साइंस बना दिया है। व्हेन आई से नॉर्मेटिव साइंस, सो केल्सन ने इसको क्या बना दिया है? नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस का मतलब होता है कि जो कंडीशन अभी होनी चाहिए थी उससे डिफरेंट है उन कंडीशन से। ओके, सो the science of law according to the Kelsen is the knowledge of hierarchy of normative relatives, normative relations, sorry guys। नॉर्मेटिव रिलेशंस मतलब होता है कि आपका नॉर्मेटिव ये चीजें ऐसी होनी चाहिए थी बट ऐसी चीजें नहीं हैं। so that is meaning by normative relations। so moving forward you will study, so thank you guys, I will start this next session, I will start you this historical school of definition of law in next session। thank you so much।